Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. So this is Mizda Sajid and I welcome you all to my channel Talim for Everyone. Welcome to Computer Science for Grade 10 lecture series. In this video, we are going to see exercise A and lab activities of chapter number 1, problem solving and algorithm designing. And if you are using this textbook, so you may find exercise A on page 18 and lab activities on page 19 of this textbook. And if you are following my channel or watching videos related to chapter number 1 on my channel, so you know that कि मैंने जो है chapter number 1 से related each and every possible explanation जो है cover करवा चुकी हूँ, ठीक है, and it's on my channel. Now we are going to see exercise different exercises from this chapter. Okay, so exercise A, let's begin with it. Here it's exercise A. Encircle the correct answer. Basically, it is MCQs. Okay, so to bake a cake is an example of, and just wait, highlight that. Okay, now to bake a cake is an example of problem, algorithm, strategy, or solution. So you have to bake a cake. Bake a cake. So it is a problem. Okay, this is a question for you, or this is a problem. Okay, so I have marked this. To find a feasible solution to a problem, the first step is to establish a starting point, find a available solution, create strategy, or identify and analyze the problem. कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, देन वी हैव टू एनालाइज बेसिकली, कि हम लोग उसको किस तरीके से जो है उस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो पार्ट बी इज द करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द प्रॉब्लम. ओके, next is step by step solution of a problem in a simple language is called as dash. Means जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो है in a simple language, that is called as problem solving, algorithm, flowchart और data structure. तो problem solving तो नहीं है, ना ही data structure है, so either algorithm or flowchart. Flowchart, you all know that, I hope so, that flowchart जो है graphical representation, and so it means that algorithm. Dash shows the logic of a program graphically. So let's confirm that it is flowchart. 5 is dash symbol is used for input and output in flowchart. So it's parallelogram. Elements of dash data structure are not connected sequentially. So either array, graph, queue, stack. So graph ऐसा है जिसमें जो आपके पास elements हैं that are not connected sequentially. Dash stores data in hierarchical manner. So it's tree, like relationship manner. When the data is pushed in stack, it means that the data is inserted. Like I give you an example, like this is a stack of you can say plates, different plates, plate 1, plate 2, 2, 1, 3, 4. अब जब आपने लास्ट प्लेट पुट की, ठीक है, पुश की इस stand में, for example, so it means that you are inserted that plate in a stand. Okay, so push in a stack means insert an object or data. Okay, so in binary tree, each child can have maximum dash node 1, 2, 3, 4. यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स तरीके से पूछा हुआ है. वैसे होता है कि in my binary tree one node has dash child. So 2 child, binary tree में एक node के 2 child होते हैं. So यहाँ पे पूछा है each child can have maximum dash node. So 1 node. Okay, क्योंकि parent तो 1 ही होगा.
Traversing an array means accessing first element, last element, any specific element, each and every element of the array. So traversing means you have to sort out or read each and every element of the data or element of the data or of the array, store each and every element of the array. So this is the correct answer, part D. So it's all about exercise A. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को जो है clear हो गया होगा. If you have any queries, so you may comment your query anytime. So now let's move towards lab activities of this chapter. So here it's lab activities now, and lab activity 1 is design an algorithm to find the greater number by taking numbers as input, numbers as input. Here we have to take two numbers as input, and we have to design an algorithm to find the greater number. Which one is the greater number? So step 1 is start. Okay, now we have to identify from two numbers. So two inputs लेंगे हम. So declare two variables A and B. Either it can be integer, it can be like float, double. वो आप लोग बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. Okay, so we have to declare variables, like उसकी nature क्या है. Step 3, read A and B. It means that जो भी variables हैं उनकी value हमने store करानी है उनमें. Then if A is greater than B, अगर A की value B से greater है, then display A is the largest number. आपने display करना है like A is the largest number, and else display B is the largest number. अगर B greater है, then you have to display B is the largest number and then stop. Okay, so it is the algorithm of this question. Okay, so I hope यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को. Next, design an algorithm to find area of a triangle. ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का जो है क्या फाइंड आउट करना है, एल्गोरिथम फाइंड आउट करना है. यहाँ पर मैं पहले बना दूँ ये, दिस इज अ ट्राइंगल. ओके, एंड ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. अब आप लोग बोलेंगे हाइट क्या है? दिस इज बेसिकली मैथ्स का पार्ट है. हाइट जो है बेसिकली दिस इज द हाइट and this is this. Okay, all right. So start, read input value, declare. हमने डिक्लेयर करवाना है. ए को करवाएंगे डिक्लेयर क्योंकि आंसर आना है बी एंड एच. तो डिक्लेयर टू वेरिएबल्स बी एच एंड ई, नॉट टू थ्री वेरिएबल्स. ओके, मैं यहाँ पे करेक्शन कर देती हूँ. थ्री वेरिएबल्स बी एच एंड ई. रीड बी एंड एच, हमने बी एंड एच को जो है इनपुट देना है. नेक्स्ट, calculate A is equal to 1/2 multiplied by B multiplied by H. You can say that apply formula. Step 5, display area of a triangle. अब हमने जो है डिस्प्ले कराना है एरिया का फॉर्मूला जो हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट किया. नाउ नेक्स्ट स्टॉप. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट दिस. नाउ question 3, sort the following steps of the algorithm in correct order for baking a cake. Means you have to bake a cake. Okay, you have to see the following step and identify which one is incorrect. So you have to put in correct order for baking a cake. So step यहाँ पे start हुआ है gather the ingredients. Step, next step is and then grease a pan, then preheat oven, then put the pan in the oven, then start pour the batter into the pan. When the timer goes off, take the pan out of the oven, set a timer, mix together the ingredients to make the batter. Okay, so correct order. Start, step 1. Step 2, gather the ingredients. Next, mix together the ingredients to make the batter. I hope so. अगर गर्ल्स मेरी वीडियो देखती हैं, ये बॉयज़ भी जिनको केक बेक करने में इंटरेस्ट हो, तो उनको पता होगा कि क्या क्या करते हैं. पहले आप इंग्रेडिएंट्स जो है गैदर करते हैं, जमा करते हैं एक साथ, देन मिक्स करते हैं वन बाय वन, देन ग्रीस अ पैन,
pour the batter into the pan. Step 5. Step 6 is preheat the oven. फिर उसी दौरान आप जो है ओवन को प्रीहीट करते हैं. नेक्स्ट, पुट द पैन इन द ओवन. फिर आप पैन जो है अपना ओवन में रख देते हैं. देन स्टेप 8, सेट अ टाइमर. टाइमर सेट करते हैं कि कितनी देर में बेक होना है. देन व्हेन द टाइमर गोज ऑफ, टेक द पैन आउट ऑफ द ओवन. जब टाइमर मतलब कि कंप्लीट हो जाता है, टाइमर जो है बंद हो जाता है, ठीक है. जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आप अपना जो है पैन ओवन से निकाल लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 10 इज स्टॉप. देन स्टॉप. फिर आप केक को एंजॉय करते हैं डेफिनेटली. सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ ड्रॉ अ फ्लो चार्ट to calculate gross salary by adding 20% house rent and 30% medical allowance in basic salary. मीन्स कि आपने फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, टू कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी. आपकी सैलरी है, ठीक है, जिसमें 20% हाउस रेंट है सैलरी में गिवन एंड 30% मेडिकल अलाउंस है, बाकी जो है बेसिक सैलरी है, ठीक है. अब वो जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी है उसका फ्लो चार्ट स्टार्ट बनाना है आपने. सो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे. ओके, नेक्स्ट आपने इनपुट बेसिक सैलरी, अपने इनपुट देना है. आपकी बेसिक सैलरी क्या है, ठीक है. नेक्स्ट आपने करना क्या है, कैलकुलेट हाउस रेंट. हाउस रेंट कैलकुलेट करना है कि हाउस रेंट कितना है ऑफ योर बेसिक सैलरी, ठीक है. 20% है बेसिक सैलरी का हाउस रेंट. आपने हाउस रेंट इन एक्चुअली कैलकुलेट करना है. देन आपने मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना है कि टोटल मेडिकल अलाउंस कितना आ रहा है आपकी बेसिक सैलरी में से. आपने सबसे पहले अपनी सैलरी इनपुट दी. नेक्स्ट अब आप कैलकुलेट करने जा रहे हो हाउस रेंट एंड देन मेडिकल अलाउंस. मैंने इसमें सेपरेट नहीं किया रेक्टेंगल को, इनपुट आउटपुट को, ठीक है. मैंने एक ही में कर लिया क्योंकि पर्पस सेम है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास स्पेस खत्म हो रही है, तो मैं रहूंगी सेम पेज पे. सेम पेज के लिए हम लोग सर्कल कनेक्टर यूज करते हैं. ओके, सेम पेज के लिए जो हम यहाँ रखेंगे वही हम दूसरे कनेक्टर में भी लिखेंगे. और ये चीज मैंने डिस्कस की हुई थी. और अगर आप सेम पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे, सेकंड पेज पे जाना चाहते हैं, तो सेकंड पेज के लिए ऑफ कनेक्टर हो रहा है, दिस इज ऑन कनेक्टर. और सेकंड पेज पे अगर जाना है आपने नेक्स्ट पेज पे, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ कनेक्टर. वो इस तरीके से होता है, ठीक है. सो फिर आपकी आ जाएगी ग्रॉस सैलरी. आप कैसे कैलकुलेट करोगे बेसिक सैलरी, आपको क्योंकि पता है बेसिक सैलरी कितनी है. आपके पास हाउस रेंट आ गया. हाउ यू हैव calculated house rent, just 20% multiply by basic salary and plus medical allowances. And how you will get medical allowances, simply 30% of your basic salary. आपको बेसिक सैलरी पता है बट आपको हाउस रेंट नहीं पता और मेडिकल अलाउंस नहीं पता. सो बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस मेडिकल अलाउंस टोटल करके आपके पास ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप, प्रिंट ग्रॉस सैलरी. अब आप प्रिंट करा दोगे कि आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी बन रही है, टोटल सैलरी, एंड देन स्टॉप, ठीक है. सेकेंड थिंग इज दैट फॉर ऑन पेज कनेक्टर एंड ऑफ पेज कनेक्टर, मैंने दोनों का जो है डिस्कशन अपने वीडियोस में की हुई है. मैं उसका लिंक अटैच कर दूंगी. सो आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा. Next is draw a flow chart for all the algorithms given in this unit. देखिए इस चैप्टर में जितने भी algorithms given है उसका आपने flow chart बनाना है. So algorithm हमारे पास जो given था algorithm 1, that is making a cup of tea. So how can we make its flow chart? So simple. Start. Place the fresh water in a pot or kettle. Next, boil the water. Okay, क्योंकि अब हम input ले रहे हैं. Put the black tea leaves in that pot because this is an input. Add milk in that pot. This is also input. Add sugar. This is sugar in the pot. This is also input. Boil for some time. Okay, this is, we are doing some working on it. Okay, and then stop. Okay. Now sum of two numbers. एक ये था हमारे पास, start, declare variables num1 num2 and sum. ओके, रेक्टेंगल यूज किया.
Now parallelogram हम input दे रहे हैं, read num1 and num2, sum a plus b, a plus b बोल रहे हैं यहाँ पे num plus, यहाँ पे जो है num1 plus num2, okay, and then display sum. You know that the parallelogram is used to display sum and then stop. So I hope so यहाँ तक clear होगा. Next is algorithm 3, average of three numbers. Okay. फ्लो एल्गोरिथम में डीपली डिटेल में जो है डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में. मैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ. ओके. नेक्स्ट स्टार्ट डिक्लेयर वेरिएबल्स num1 num2 num3 एंड एवरेज. मीन्स कि यू हैव टू डिक्लेयर दीज थ्री वेरिएबल्स एंड देन एवरेज ऑल्सो, क्योंकि आपने जो भी लेना है वो एवरेज में लेना है. ठीक है. रीड num1 num2 num3 input. Average is equal to num1 plus num2 plus num3 divided by 3. Print average. Okay, and then stop. Volume of a box. Algorithm ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Flow chart. Start. Declare variable length, width, height, and then volume. Input length, width, height. Calculate volume is equal to length into width into height. Print volume and then stop. Okay. Percentage calculate. Start, declare variables part, total, percentage, read values part and total, calculate percentage is part, all right, multiply by 100, divide by total, display percentage, then stop. Part means के obtained marks, okay, divided by total जितने भी subjects को कहा जाएगा आपको. Okay, it depends. Now next is question number 6. Draw the following tree with 6 nodes. Nodes means vertices, okay, and graph with 5 nodes. So tree with 6 nodes, 1 2 3 4 5 6. So here it is, it's tree. Not necessary कि ये 5 यहाँ पे हो, 5 यहाँ पे भी हो सकता है, it depends. And graph with 5 nodes, 1 2 3 4 5, and multiple edges like 1 2 3 4 5 6, 6 edges हैं and 5 nodes हैं. यहाँ पे edges का नहीं बताया हुआ कि कितनी edges होनी चाहिए, ओके, या यूनी डायरेक्टेड या बाय डायरेक्टेड, ठीक है, कुछ नहीं बताया हुआ, ठीक है. जस्ट they ask us to draw the graph with 5 nodes. So here is 5 nodes and 6 edges. अगर आप तो चाहते हैं आप लोग ये वाला जो है रिमूव भी कर सकते हैं. So 5 nodes and 5 edge हो जाएंगे. So it depends. So that would be cycle graph. Okay. So I hope so यहाँ तक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अच्छा, इसके अलावा लैब एक्टिविटीज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल, जो कि आप लोगों ने कुछ चीजें आपस में ग्रुप में जो डिस्कस करनी है. ओके. सो वो मैं क्वेश्चन नहीं कवर करवाऊंगी अभी, अगर कभी मौका लगा तो मैं करवा दूंगी वो क्वेश्चन कवर. सो आई होप सो you have enjoyed this video and ये वीडियो समझ में आई होगी. If you have any queries, so you may comment your query anytime. I will try to respond them as soon as possible. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to subscribe my channel Talim for Everyone and subscribe my button. Subscribe my channel. Don't forget to subscribe my channel and like and share my channel. Okay. So thank you once again. Allah Hafiz.